Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. Let's start. Yeah, is the stream started? Yes, it has started, but I'll also check it on my mobile. Just give me a minute. Are you able to hear my audio loud and clear, everybody? Because at my end, it's showing it has started. Just give me a minute. I'll also play on my mobile. Yeah, is my audio loud and clear? If yes, please give me a tech check. Even I'm checking on my mobile whether the stream has started or not. I'll just go to the live section. Yeah, it has started. So we are all set, friends. Yesterday, आपको एक बहुत AV is good. That's fine to know. Good to know. Let me share my screen. Yeah. So now start करने से पहले हम disclaimer read out कर देते हैं. This is for educational and informational purpose only, and does not constitute financial advice. So yesterday we कल बहुत ही जोर से एक मूव देखने मिला इंडेक्स में. It was a pre expiry day और सच मूव्स डू हैपन. एक चीज याद रखिए, नथिंग मूव्स इन वन स्ट्रेट लाइन. मार्केट बाय द नेचर इज फ्रैक्टल. कभी उसको मत भूलिए, अदरवाइज एज अ ट्रेडर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको आज दिस इज द प्राइस चार्ट ऑफ क्रूड. देखिए, क्रूड में भी डायमंड बन रहा है. डायमंड का मतलब क्या है? डायमंड का मतलब है अभी यहाँ से क्रूड एक आध दिन इधर रहेगा. आफ्टर दैट एक्सपेक्ट अ मूव इन क्रूड आइदर टिल 117 और एक्सपेक्ट अ डिक्लाइन टिल दिस. ये मीडियम टर्म व्यू रहेगा. आइदर क्रूड 78 होगा नीचे में या ऊपर में 118 हो जाएगा. बिकॉज ये डायमंड जो है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. कैन यू क्लियरली सी अ डायमंड पैटर्न फॉर्मिंग इन क्रूड? और डायमंड पैटर्न जब बनती है तब एज ए ट्रेडर हमें वेट करना ब्रेकआउट के लिए. अगर क्रूड ऊपर ब्रेकआउट देता है सो इट विल बी नॉट अ गुड साइन. इफ एवरीबडी कॉपीज द दिस थिंग पैटर्न इन क्रूड, लेट मी नो. डायमंड जैसे बोलते हैं ना, इट्स रेयर. डायमंड पैटर्न्स आर रेयर, रोज बनते नहीं है, बट यस क्रूड में देखने को मिला है. सो शबाकी, डोंट फॉरगेट द डायमंड पैटर्न इन क्रूड. कोई भी साइड टूट सकता है. डायमंड हमें डायरेक्शन नहीं बताता है. अगर क्रूड 96 के नीचे गया तो एक मंदी है क्रूड में. अगर 105 क्रूड तोड़ता है तो एक तेजी हो जाएगी क्रूड में. सो या धीरज, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डायमंड पैटर्न एंड इट्स रेयर पैटर्न बिकॉज डायमंड्स बाय इटसेल्फ आर रेयर. व्हेन इट फॉर्म्स यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट. और टॉप में बना है तो देखते कि क्या ये डायमंड कंटिन्यूशन रहेगा $118 के लिए या मंदी लेके आएगा $78 के लिए. तो हम अभी रोज क्रूड का चार्ट चेक करेंगे. जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट दिस. आफ्टर दैट विल गो टू द मार्केट्स. मेन हेडलाइंस हमें क्या बता रही है? मेन हेडलाइंस हमें ये बता रही है कि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर स्टडी आफ्टर टेक लेट सेल्स ऑफ. मतलब टेक में काफी सेल ऑफ देखने को मिला कल नैस्डैक में, जो कि करीब करीब आपका 134 पॉइंट का, आधा परसेंट. डाउ 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ. तो ग्लोबल मार्केट्स में जो है वो एक तरह का साइडवेज पैटर्न है. देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत हाई. अगर कल भी आप देखो तो डे लो से इंडेक्स बहुत रैली किया, बट क्लोजिंग से आप देखो तो इट वाज मोर और लेस ऑफ अ फ्लैट. तो इसी को हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी. सो अभी यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, सिर्फ 12 पॉइंट्स डाउन है. यूरो फ्यूचर्स अप है. बोवेस्पा ब्राजील, ब्राजील में इसलिए देखता हूँ बिकॉज वो भी इमर्जिंग मार्केट्स में आता है. फ्लैट है 40 पॉइंट. निकाई डाउन है 800 पॉइंट. सो पॉजिटिव क्रूड आप देख लो सर. क्रूड के बारे में पॉजिटिव दिस थिंग. मैं वापस से एमसीएक्स का चार्ट भी देखूंगा सर. सो मोर और लेस जो माहौल दिख रहा मार्केट का वो साइडवेज टू फ्लैट है. और देखिए, एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर रैली आती है फ्रॉम द डेज लो, तो हमें उसको नोट करना है कि प्रोबेबली एक्सपायरी
आर रेंज बाउंड टू साइडवेज बेस्ड ऑन OI डिस्ट्रीब्यूशन, बट ब्रेकआउट्स के लिए भी हम वेट करेंगे. आफ्टर दैट we will go to first we will go to VIX India. Sorry, first we go to gift nifty. Gift nifty more or less 50 पॉइंट प्लस माइनस में रहेगा. आई डोंट थिंक इट वुड बी मोर देन दैट. यस. और देखिए हम ये गैप के बारे में बात कर रहे हैं, गैप को भूलना नहीं है आपको. तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखो तो 37 पॉइंट्स प्लस है. इट्स फ्लैट विद इन सिंक विद द ग्लोबल मार्केट्स. और गिफ्ट निफ्टी में एक चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ पे सेलर है. इस दिन का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग अभी तक निकाला नहीं है. और जब कैंडल्स में टेल बनती है ना, तो टेल सिग्निफाइज बाइंग प्रेशर नॉट मोमेंटम. रिमेंबर दैट. बुलिश कैंडल सजेस्ट मोमेंटम, टेल सजेस्ट बाइंग प्रेशर. मतलब डिप पे लग रहा है मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है. यू कैन ट्रेड फ्यूचर्स इन क्रूड. आई हैव नेवर ट्राइड ऑप्शंस इन क्रूड धीरज. तो ये गिफ्ट निफ्टी. इसके बाद हम विक्स पे जाते हैं. देखिए विक्स में आप भी कंफ्यूज रहेंगे, मैं भी कंफ्यूज रहेगा. एज आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम अ गाय लाइक यू. आपकी तरह ही हूं मैं. बिकॉज कल देखिए विक्स भी ऊपर था और मार्केट भी ऊपर था. और देखिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि विक्स नॉनस्टॉप ऊपर जाए और मार्केट ऊपर बाय. कहीं ना कहीं मार्केट को विक्स के साथ और इनवर्स डायरेक्शन लेना है. बट आज की तारीख में विक्स में बुलिश ब्रेकआउट दिखा रहा है. अगर विक्स 19.92 20 का भाव विक्स में दिखता है, अगर दिख गया ना फ्रेंड्स, ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर, तो मार्केट में फिर से एक नरमी आएगी. रिमेंबर दैट. और विक्स अगर आप देखिए तो एक एक दो तीन, अभी पुराना नहीं देखते हम लोग, मोस्ट रिसेंट देखते. अगर आप विक्स में देखो तो ये लो बना, 2 बार सेम लो बना. तो विक्स में भी 1 2 3 4 5 दिन का रेंज है. विक्स is stuck in 5 days trading range. Everybody got it? Give me either a yes or a no. और रेंज हमें ये बताता है कि जब तक विक्स का ऊपर का ब्रेकआउट नहीं होगा, रेंज में रहेगा. मार्केट में भी देखिए बहुत ज्यादा वो हम जो गैप देख रहे हैं निफ्टी में, वहां तक जाएगा. बट बिलो दैट करंटली लुक्स टफ. अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रूड में डायमंड ब्रेकआउट आता है तो इट्स बैड. देखिए यहाँ से आपको 2 चीज ध्यान रखना है. सी वी आर ट्रेडर्स. आज की तारीख में हमें इंटर मार्केट देख के काम करना है. नंबर 1, क्रूड में अगर डायमंड ब्रेकआउट अपसाइड आया तो विच इज विल बी बैड फॉर इक्विटीज. और नंबर 2 आपको ऑलवेज देखना, डेली प्लीज चेक रेंज ब्रेकआउट इन विक्स. ये 2 चीज रोज आपको चेक करना. हम सेशन में करेंगे. अगर मैं भूल जाता हूं तो प्लीज समबडी ओवर हियर रिमाइंड मी. राइट. So the 2 things which we have to watch as a trader to keep a track of the markets is the diamond breakout in crude and the range breakout trade. ये 2 हुआ तो the case is bearish for equities. Do you all agree, friends? Give me either a yes or a no. As I said, देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्रेंड्स, प्लीज. ओके, आई एम अ गाय लाइक यू हु जस्ट वॉचेस द चार्ट्स एंड जो दिखता है वो आपको नरेट करता हूँ. थोड़ा ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस है, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट. And as long as crude and VIX is going to stay in a range, we will see the अभी की तरह जो volatility चल रही है, that volatility will continue. Right? Trend establish होना बहुत टफ है ये मार्केट में, because जब तक क्रूड और विक्स रेंज में, मार्केट भी रेंज में रहेगा और रेंज में 200-300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आपको देता रहेगा, विच इज अ ड्रीम मार्केट फॉर डे ट्रेडर, प्रोवाइडेड यू गेट योर थिंग्स राइट. ओके, सो आफ्टर दिस अब हम निफ्टी पे जाएंगे. तो नाउ देखिए जैसे विक्स में आपको रेंज दिखा ना, वैसे निफ्टी में भी कैन यू सी द रेंज. सी ऑल मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दैट. सो दिस इज द रेंज इन निफ्टी. Do I need to say anything or it's very clear? See, I want you to start thinking.
आई कैन जस्ट गिव यू द डेटा पॉइंट्स, मैं आपको डेटा पॉइंट दे सकता हूँ, चार्ट्स का हाईलाइट दे सकता हूँ। जब जब तक आप नहीं सोचना चालू करोगे आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आउट देयर। Sabaki says clear. So Nifty is also in a range now. निफ्टी ये रेंज में है, अभी मैं विक्स ले आता हूँ। This is VIX. I think data updation is going on. It's fine. So VIX is in a range, Nifty is in a range. Wait for a breakout. Now breakout हुआ तो क्या बहुत strong breakout होगा? I have my doubts because अगर आप ऊपर देखो, if you just go a bit up, ब्रेकआउट जो रहते हैं उसमें आप बहुत जोर से तेजी में मत आ जाना प्लीज। ओके, जो 50 दिन का एवरेज है जिसको मीडियम टर्म रेजिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं, विच इज समवेयर अराउंड दिस। देखिए प्रीवियसली क्या हुआ, आप ध्यान दो, 50 डे ब्रेक किया, एक दो दिन मार्केट ऊपर गया, दिस इज कॉल्ड विपसॉ, अगेन केम डाउन, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे फिर 50 डे ब्रेक किया, एक दो दिन मार्केट ऊपर गया। आर यू ऑल सीइंग दिस फ्रेंड्स, द पैटर्न विच इज एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ, एंड अगेन केम डाउन। सो अगर बीच में 200-250 पॉइंट की तेजी हो जाती है तो इट इज नॉट अ रिवर्सल, इट्स अ स्पाइक, राइट? So that's the broad pattern for the markets. It's whipsawing 50 DMA and giving you an impression that breakouts are genuine. All breakouts are fake outs right now. Yeah, the range is very big. Let's accept it. It's 23,200, 800, 600 points range is in the market. दैट्स वाई ट्रेडर्स पागल हो रहे हैं, अभी इतनी वॉलिटिलिटी है कि 300 पॉइंट गड़बड़ हो रहा है, एंड यू हैव टू लिव विद इट। एंड द बेस्ट टूल वी हैव फॉर दिस इज आर सेंटिमेंट, OI सेंटिमेंट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, you have to go to insta options. If I go to insta options, see, I'll just point out yesterday. Yeah, is this faking the breakout, Dheeraj? Now yesterday you have, अभी देखिए ये market is not tough to trade but it's challenging, और आपको as a trader you have to be prepared। देखिए मैं ट्रेंडिंग OI पे जा रहा हूँ, ट्रेंडिंग OI पे आपको क्या करना, सवेरे जहाँ पे मार्केट खुल रहा है वो ATM लेना, राइट, और 6 स्ट्राइक्स बिलो और 6 स्ट्राइक्स अबव ऐड कर देना, दैट्स इट, राइट। और फिर आपको ये ट्रेंडिंग OI का क्रॉसओवर देखना इंट्राडे। इफ all the 12 strike price which you have added, this is put and call, अगर ये क्रॉसओवर आता है कॉल और पुट का, which means put ऊपर जा रहा है, that means traders are selling put, and if this happens, fine, market irrespective of the news flow and all, it may not fall till the crossover is not negative। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता है, this is zero line where the sentiment from the OI part is turning positive। No, Darshan, that's 300 points, which is 1%. So at 1124, market did give a bullish crossover on the OI part. Let's go and check at price at 1124. Now I'll remove it. Right. So where was market at 1124? This is it over here. See, you will not get at the top, but you will get now. Okay, chalo bhai, aaj short बंद रखते थोड़ी देर, 1124 somewhere around here. Everybody clear? And then if you try to short at any levels, you'll get stopped out. So trending OI, you'll have to watch very, very clearly in this markets. Everybody copied, give me either a yes or a no. Because if once volatility is there, अगर volatility आती है तो वो कहाँ से आती है? ऑप्शन सेलर से आती है, शॉर्ट कवरिंग से आती है, और उसमें हमें ओपन इंटरेस्ट राइट नाउ इज योर बिगेस्ट इंडिकेटर। खाली ऐसा मत देखो किधर बिल्डअप है, सी द क्रॉसओवर्स हैपनिंग एंड आल्सो हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। After this, I'll go to today's expiry. My Insta option, which is Stocko Incred Money Insta options platform, is getting loaded. आज हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप
today is a Nifty expiry. Where is the build up? So I go to OI profile. All I need is there in my platform. Yeah, it's getting uploaded. Right. और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, which is OI statistics. Since put writing is high, right, call writing highest at 23,800 पे, मार्केट बंद हुआ 23,561. सो लग रहा है ये तो नहीं क्रॉस होगा. दैट्स व्हाट इट्स रेजिस्टेंस. क्रॉस हो गया तो ब्रेकआउट. हाईएस्ट पुट हुआ इज 23,400. सो अभी जाते चार्ट पे 23,400. लेट मी गो टू द आवरली चार्ट. See 800, this is where the OI in a call is maximum. Around ये हाई पकड़ के ट्रेडर्स ने कॉल बेचे. अगर मैं 15 मिनट पे जाता हूं तो कल जो लिफ्ट ऑफ आया था मार्केट में, विच केम फ्रॉम दिस बेस, तो ये पकड़ के पुट लिखे. सो द स्टार्टिंग रेंज फॉर यू एज अ ट्रेडर इज 25,800. और क्रूड पे ध्यान रखना आप सब. और नीचे में 23,000, या आई करेक्ट इट, गलती में से मैंने लिख दिया. या दिस गेव अ लॉन्ग एट अ रीटेस्ट. दिस इज 23,800. So this is how the setup is starting for the day. After that, whichever side it breaks, you may see that 50 and 100 points dip, and then on a 15 minutes we have a lower support which is way down here. So आज का market more or less is defined based on OI, which is I'll just first look at this. मैं ये range पे ध्यान दूंगा. उसके बाद कौन सी साइड टूटता, उसके बाद में ट्रेंडिंग OI देख के I will form a view. So that's Nifty for the day. If you want, take the screenshot, everybody. Done. So Nanavati 6 tries how to put on trending OI chart. Okay. See, index is closed at 26,600. Let's say index open at 23,600. So I go to my trending OI. I go to change strike price. I clear all. I go to 23,600, which is ATM, and 6 strikes above. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 6 strikes price below the ATM wherever it opened. 3, 4, 5, 6. Got it, Nanavati ji? And I submit it. Clear, sir? Wherever it opens. It was just a reference, Shabaki. So that's how the Nifty is. If you want, take the screenshot, whatever you want, because this is for educational purpose. We are trying to figure out where the demand is, where the supply is. Now let's go to Bank Nifty. Nanavati, is it clear, sir? I'm waiting for either your yes or a no. So Bank Nifty कल का जो लो था वो एग्जैक्ट गैप पे आया, और गैप लो पे हमें क्या देखने मिला है कि एक स्पाइक आया विच इज अ टेल. अभी बैंक निफ्टी में एक कन्फाइंड चैनल है विच इज दिस, राइट. सो इट्स अ चैनलाइज मूव. चैनल से बाउंस आता है. या यू सेलेक्ट विद 50 आल्सो. इट्स जनरली वी टेक 1% फ्रॉम ATM, Nanavati, right? So Bank Nifty also is in a pullback mode, but now let's go to 60 minutes charts. See, the range in Bank Nifty is very well defined. यहाँ पे seller बैठा है. I don't think this 54,300 will be crossed. सारी मारा मारी है उसके नीचे आपको. तो पहले आपको 60 minutes पे जाना है. Once I go to 60 minutes time frame, this range is defined. So सबसे पहले तो मेरा ये resistance आएगा, which is yesterday's gap. Once get crossed, then I'm looking at little higher on the resistance or the supply side, which is here. और support side में कल का बेस लेके चलो आप, because कल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में उछाल आया वो ये लेवल से आया, right? Then we have one at a lower levels. This is what we call two set of buyers coming together, which is a strong level. Everybody clear on the Bank Nifty part also? And as I said, you can't leave channels. Channels को आप छोड़ नहीं सकते और channels आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा. So let's mark this channel. So Bank Nifty right now the move is channelized. Once channels break on the downside,
then you see some little bit. So this is how your setup for Bank Nifty is right now, which is from the close. I think, yeah, I think more or less we are able to freeze the plan for the day. Everybody clear about this so far? So we have done in detail Nifty, Bank Nifty. Keep a watch on crude and keep a watch on VIX. Everything is now in a range. Who is the leading indicator? Crude and VIX is the leading indicator. Let's see which side they break. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody.